Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will start with the practice questions for the chapter in indifference curve and budget line, right? So we will do the first 20 marker question for this chapter today. Let's start. We are already done with the practice questions for the chapter utility, right? Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Question number one. Analyze using indifference curve. Analyze using indifference curve and budget line. Analyze using indifference curve and budget line analysis. Explain why a consumer will explain why a consumer will buy why a consumer will buy more of a normal good, will buy more of a normal good, just a second, at a lower price, uh, at a lower price than at a higher price. Okay. So this is a 20 marker question. I am reading the question. क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन एनालिसिस एक्सप्लेन व्हाई अ कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ अ नॉर्मल गुड एट अ लोअर प्राइस, ठीक है, देन एट अ हायर प्राइस, 20 मार्क्स. सो लेट्स गो फॉर दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. 20 मार्क्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को याद है? 20 मार्क्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी आपको याद है? 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर यू गेट 14 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस, ठीक है. 20 मार्कर क्वेश्चन में 14 मार्क आपको मिलेंगे नॉलेज और एनालिसिस के, और 6 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इवेल्युएशन के, ठीक है. इवेल्युएशन मीन्स कंक्लूजन, राइट. इन ऑर्डर टू गेन माई नॉलेज मार्क, first I have to see what definitions can I give. So first of all, I can define what is indifference curve. Okay, let's make the marking scheme, then we will write down the full answer. Okay, first I am going to define what is indifference curve plus its diagram, right. पहले indifference curve define करेंगे, इसकी diagram बनाएंगे. Okay, इसके बाद I can define what is budget line, then I can define what is budget line plus its diagram, right. मैं बजट लाइन डिफाइन कर सकता हूँ, उसकी डायग्राम बता सकता हूँ. इसके बाद आई कैन डिफाइन व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट. इसके बाद आई कैन डिफाइन व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्लस इट्स डायग्राम, राइट. तो फर्स्ट आई विल डिफाइन इंडिफरेंस कर्व प्लस इट्स डायग्राम, then budget line plus diagram, then consumer equilibrium plus its diagram. Then what can I define? I can define effect of price change. Then I can define effect of price change. तो व्हाट डज हैपन, आप बता सकते हो इसको कि प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट मारती है, प्राइस की वजह से टिल्ट होती है बजट लाइन, ठीक है. आप ये बता सकते हो उसके बाद इसको डायरेक्ट, ठीक है. फिर आप इसको डिफाइन करेंगे, इसके बाद आप इसको डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल गुड क्या होता है, ठीक हो गया. आप इसके बाद इसको बताएंगे नॉर्मल गुड ये क्या होता है. तो आपको अगर याद हो तो नॉर्मल गुड इज अ गुड विच फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड, राइट. Normal good is a good which is high quality, comma, branded and expensive. ओके, आप इसको बताएंगे नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव है, एंड इट फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड.
What do you mean by it follows law of demand? Whenever price will increase, quantity demand will contract, and whenever price will decrease, quantity demand will extend, right? So we will tell these things, right? Okay, then we will make a diagram. We will tell the case increase in price and decrease in price, increase and decrease in price in case of नॉर्मल गुड्स। इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे? इसके बाद हम लोग बताएंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ये बताएंगे हम लोग। अच्छा, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। वी गोना डू दिस थिंग। हम लोगों को डायग्राम दो बनानी पड़ जाएंगी। एक तो हम इसको बताएंगे कि प्राइस बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा। अब देखो A2 के पेपर में ना आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, तो एक स्मार्ट बच्चा जो होगा ना वो क्या करेगा, वो एक ही डायग्राम में प्राइस का बढ़ना और प्राइस का कम होना दोनों दिखा देगा। इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस दोनों एक ही डायग्राम में दिखा देगा। एक जो बच्चा स्मार्ट स्मार्ट वर्कर होगा, जिसको अपना पेपर टाइम में खत्म करना होगा, वो ये वाले ऑप्शन के लिए जाएगा। वरना आप दो, अगर दो डायग्राम फिर दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, गलत नहीं है, इट्स नॉट इरेलीवेंट, लेकिन या इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो आप फिर इसको ये बताओगे, यहाँ तक आपको 14 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आप इसको कंक्लूजन की तरफ जाओगे। कंक्लूजन मीन्स आप इवेल्युएशन की तरफ जाओगे और आप क्या बताओगे, आप इसको बताओगे लिमिटेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। आप सारी लिमिटेशंस बताओगे। सो इज मार्केट मार्जिन स्कीम क्लियर टू एवरीवन? शुड वी स्टार्ट विद द आंसर? सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। इफ यू गाइस कैन कॉपी विद मी, आप कॉपी करते रहें साथ साथ, बिकॉज मैं आंसर के साथ साथ समझाऊंगा भी। तो या वी वुड बी डूइंग रिविजन वन मोर टाइम, ठीक है। ओके, एक और बार हमारा जो है ना वो कोर्स का ये वाले चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वी हैव टू टेल व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो वी विल टेल इंडिफरेंस कर्व indifference curve represents indifference curve represents different possible combinations. Indifference curve represents different possible combinations of two goods, right? इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो आप दो गुड्स के यूज कर सकते हो, राइट? तो क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स between which between which between which consumer is between which consumer is indifferent, right? In other words, in other words, an indifference curve, in other words, an indifference curve is the locus of is the locus of various points, is the locus of various points showing different combinations, showing different combinations, showing different combinations of two goods
which is providing which is providing equal utility to the consumer, right? So what does indifference curve shows? Indifference curve shows different possible combinations which between which consumer is indifferent. बहुत सारे combination show कर रहा होता है, consumer उसके दरमियान indifferent होता है because he does not know at which point he would be getting equal satisfaction or equal utility. So he will continuously keep on changing his consumption bundle again and again, right? Okay, so here I am gonna write as shown in diagram number one. As shown in diagram number one. Now we have to define what is budget line, right? What is budget line? Budget line represents our fixed budget, right? So budget line is the graphical representation. Budget line is the graphical representation of all possible combinations of all possible combinations of all possible combinations which can be purchased with the given budget. बजट लाइन क्या बताता है? बजट लाइन बताता है वो सारे पॉइंट्स जो आप अपनी गिवन बजट में परचेज कर सकते हो, यानी कि आप उसको अपनी गिवन बजट में यू कैन अफोर्ड दीज पॉइंट्स, ठीक है? अब आप इसको बताएं, ऑल दी पॉइंट्स, आई एम गोना यूज शॉर्ट फॉर्म, पेपर में नॉट अलाउड, पेपर में अलाउड नहीं है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, पेपर में नहीं अलाउड है। ऑल दी पॉइंट्स ऑन बजट लाइन आर एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। All the points on the budget line are efficient and affordable, but the point inside the budget line is inefficient but affordable, is inefficient but affordable, as our entire budget will not be utilized, right? इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि हमारा पूरा बजट यूटिलाइज नहीं होगा, पूरा बजट यूज नहीं होगा, इसलिए जो पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन है वो इनएफिशिएंट है, बट दे आर अफोर्डेबल, राइट? नाउ द पॉइंट outside the budget line is unattainable combination, as it cannot be purchased, as it cannot be purchased as it cannot be purchased with the given budget। ठीक है, जो पॉइंट आउटसाइड है वो आप लोग परचेज नहीं कर सकते गिवन बजट में, as shown in diagram number 2, right? So we are done with what is indifference curve, what is budget line. Now the third thing, what is consumer equilibrium, right? So do you guys remember equilibrium is a point where indifference curve is tangent to the budget line? सर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होंगे, राइट? तो मैं इधर लिखूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a point where indifference curve is tangent to the budget line, is tangent to the budget line,
where a consumer, where a rational consumer, where a rational consumer, where a rational consumer gets equal, where a rational consumer gets equal satisfaction between both of the goods, between both of the goods, which is represented by the formula. So, do you guys remember the formula, which is represented by the formula? And as shown in diagram number 3. Okay, so do you guys remember the formula? Do you guys remember the formula? Marginal utility of x, marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of y upon price of y. So we are done. No, formula भी पूरा लिखना है. Formula भी short form में allow नहीं है. Now we are done with three concepts: indifference curve, budget line, and equilibrium. Now we will make the diagram. Okay, so three diagrams. Okay, so first let's do the labeling. This is good Y quantity, and this is your good X quantity, right? Sir, why have you written quantity on both of the axes? Because if you remember the definition of indifference curve, so indifference curve shows all possible combinations which you can achieve. Okay, all possible combinations between which consumer is indifferent because he does not know that at which point he will get equal satisfaction, right? That is why I have labeled quantity on both of the axes. Okay, so now I am making a rectangular hyperbola curve. I have made a rectangular hyperbola curve and this is your indifference curve. सर ये rectangular hyperbola क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप x के यूनिट्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे y के यूनिट्स कम होते रहेंगे. इट मीन्स के जैसे जैसे आप अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे तो एक यूनिट बढ़ेगा दूसरा यूनिट गिरेगा. दैट इज वाई दिस शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, as you change your combination from point A to point B, आप जैसे ही अपने कॉम्बिनेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चेंज कर रहे हैं, बी से सी पे चेंज कर रहे हैं, सी से डी पे चेंज कर रहे हैं, तो आप देखें कि एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है और वाई की क्वांटिटी कम हो रही है. सवाल ये है कि आप बार बार अपने कॉम्बिनेशन को चेंज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू आर इनडिफरेंट along the indifference curve. You do not know at which combination you will get equal utility or equal satisfaction, so you will keep on again changing your combination. Okay, this is the first diagram. Again I have made the same axis, right? ये मैंने axis बना दी वापस. Now your budget line is a straight line. This straight line is your budget line. That this straight line is your budget line. Why is budget line a straight line? Because every person's budget is fixed, right? So budget line is a straight line. These are some points on the budget line. These are known as A, B, and C. These points on the budget line are efficient and affordable. You do not need to label because you have already written these points are efficient and affordable. Why? Because if we operate on the budget line, our entire budget is, if we operate on the budget line, if you operate on the budget line, so your entire budget is consumed. That's why these points are efficient and affordable. So the point inside the budget line is inefficient but is affordable because at this point your entire budget is not being consumed, right? This point outside the budget line
is unattainable point. What do you mean by unattainable point? You mean by unattainable point that this cannot be achieved because you do not have that much budget. It's out of the budget basically, right? Okay. ओके नाउ दी थर्ड डायग्राम. अब मुझे जो डायग्राम बनानी है वो मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाना है. तो मुझे बताओ बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज एवरी पर्सन बजट इज फिक्स्ड. सो आई हैव मेड अ स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज बजट लाइन. ओके. दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व. ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया. ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया. ठीक है. और जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है वो ये इक्विलिब्रियम है. और वहां से आ गई गुड एक वाई की क्वांटिटी. नीचे आ गई गुड एक्स की क्वांटिटी. ऐसा ही है सर. ये आ गई गुड वाई की क्वांटिटी. ये आ गई गुड एक्स की क्वांटिटी. ठीक लिखा है. तो सर ये जो आपका पॉइंट है ना ये है आपका वो पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को दोनों गुड्स के दरमियान इक्वल सेटिस्फेक्शन रिसीव होगी. और इस पॉइंट पे आके जो एक्स की यूटिलिटी है वो वाई की यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगी. सही है सर. दिस इज अ पॉइंट वेयर योर कंज्यूमर विल गेट इक्वल सेटिस्फेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द गुड्स. सर वाई? सर यही वाला पॉइंट क्यों आपका इक्विलिब्रियम है? बिकॉज ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके बजट में भी अफोर्ड हो रहा है. और ये वो कॉम्बिनेशन है दोनों गुड्स का. ये दोनों गुड्स का वो कॉम्बिनेशन है जो आपके बजट में भी आ रहा है. और जिसमें जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इतने यूनिट्स वाई के और इतने यूनिट्स अगर मैं एक्स के इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी. ठीक है. सही है. सो दीज आर दी थ्री डायग्राम्स वी नीड टू मेक. ओके. सो दिस इज डायग्राम नंबर 1. दिस इज योर डायग्राम नंबर 2. लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज योर डायग्राम नंबर 2 and this is your diagram number 3. Okay. Okay, so now we have to tell प्राइस से होता क्या है. फिर नॉर्मल गुड बताना पड़ेगा. फिर हम लोग आगे जाएंगे. तो अब हम इसको बताएंगे. चेंजेस इन प्राइसेस changes in prices will always cause changes in prices will always cause a tilt in budget line. ठीक है. अब इसने सवाल में बोला है इसने कि प्राइस बढ़ भी रही है कम हो रही है. तो दोनों बताना है इसको. एन इंक्रीज इन प्राइस will reduce our budget will reduce our budget, causing a leftwards tilt in budget line. And a decrease in price and a decrease in price will increase our budget, causing a rightwards tilt in budget line. So now I am done. मैंने इसको ये बात बता दी है कि बजट लाइन अगर बजट प्राइस में चेंज आएगा तो उससे बजट लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. नाउ आई हैव टू टेल व्हाट इज अ नॉर्मल गुड. राइट. सो व्हाट इज नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव है. और नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है विच मीन्स प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन. सो वी विल फॉर्म अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. राइट. सो नाउ आई हैव टू टेल हिम व्हाट इज नॉर्मल गुड. So yeah, normal goods. Normal goods are those goods which are high quality. Normal goods are those goods which are high quality, comma branded and expensive, and they follow
and they follow law of demand, which means and they follow law of demand, which means an increase in price, which means an increase in price will contract quantity demanded, while a decrease in price extends quantity demanded, while a decrease in price extends quantity demanded. So creating a negative relationship, creating a negative relationship, forming a downward, forming a downward sloping demand curve. Okay. So we are done with what happens due to change in price. What is a normal good, right? Okay. So now, according to your question, according to your question, now what we need to do? We need to make the diagram ना. अब हमें इसको एनालाइज करना है. हमें इसको बताना है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और प्राइस कम होगी तो नॉर्मल गुड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. नाउ आई हैव टू मेक अ डायग्राम एंड आई हैव टू एक्सप्लेन इट. So let's make the diagram, okay? Okay, be with me. Okay, first we will make two axes, right? First we have to draw two axes, right? सबसे पहले हमने दो एक्सेस बनानी है, right? ये हमने दो एक्सेस बनानी है, ठीक है? Okay, so this is good Y quantity and this is your good X quantity, right? This is price of X and this is quantity of X, right? Okay, so always remember budget line is a straight line, right? So first we had made our budget line. This straight line is our budget line, right? Okay. And then we made a normal downward sloping demand curve. ये normal downward sloping demand curve हो गया, right? अब आप मुझे बताएं प्राइस बढ़ रही है तो बजट लाइन मारेगी लेफ्टवर्ड टिल्ट क्योंकि हमारा बजट कम हो जाएगा एक्स के लिए. और अगर प्राइस कम हो रही है तो बजट बढ़ जाएगा तो बजट लाइन राइट वर्ड टिल्ट मारेगी. तो पहले बजट लाइन गई ए बी से ए सी, उसके बाद गई बजट लाइन ए बी से ए डी, ठीक है? नाउ आई विल मेक एन इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम विच आई विल फॉर्म एन इक्विलिब्रियम. तो देखें जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पुरानी बजट लाइन ए बी और पुराना इंडिफरेंस कर्व आई सी जहां पर टेंजेंट होगा वो होगा मेरा इक्विलिब्रियम. और वहां से जहाँ ये नीचे डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से मैं प्राइस और क्वांटिटी निकाल लूंगा, ठीक है? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा. ये प्राइस ऑफ एक्स हो गई और ये हो गई क्वांटिटी ऑफ एक्स, राइट? और ये पॉइंट ए हो गया डिमांड कर्व पे. अब आप मुझे जरा एक बात बताएं, अब आप मुझे एक बात बताएं जहाँ पे न्यू बजट लाइन और न्यू इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा वो होगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम. तो आपकी न्यू बजट लाइन ए सी और आपका न्यू इंडिफरेंस कर्व आई सी वन इस ई वन वाले पॉइंट पे टेंजेंट होगा. यहाँ से नीचे लेके जाऊंगा तो आ जाएगी न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी, ठीक है? तो ये देखें आपकी प्राइस आ गई, ये न्यू प्राइस आ गई पी एक्स वन और ये आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी क्यू एक्स वन और ये डिमांड कर्व पे न्यू पॉइंट बी आ गया. ऐसा ही है. अब आप मुझे बताएं जरा जहां पर आपकी न्यू बजट लाइन ए डी और आपका न्यू इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा, जहां पे आपका न्यू इंडिफरेंस कर्व आई सी टू और आपकी न्यू बजट लाइन ए डी टेंजेंट होगी वो होगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम. ऐसा ही है. और वहां से आ जाएगी
वहां से आ जाएगी न्यू प्राइस और आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। तो आप देखें, ये आ गई न्यू प्राइस और ये आ गई बेटा न्यू क्वांटिटी, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। देखें डायग्राम में, जैसे ही प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, जैसे ही प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है ए से बी, और डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है ए से सी, राइट। इज एवरीवन विद मी? Okay, so I guess everyone is with me, right? Now, when I will join the three equilibrium points, so an upward sloping curve is formed, and this curve is known as price consumption curve, right? Now, when I will join the two equilibrium points, and upward sloping curve is formed, and this curve is known as PCC, right? So, is the diagram clear, guys? Diagram समझ आई? Now let's start with the diagram explanation. I have to explain this diagram. So अभी आप कॉपी करना रुक जाएं और मेरे साथ साथ देखें ताकि हम लोग एक अच्छा सा आंसर डेवलप कर सके, ठीक है? So let's start. Okay. First I will explain what is equilibrium. Equilibrium. Equilibrium is a point where indifference curve. Equilibrium is a point where indifference curve is tangent to the budget line. Is tangent to the budget line, right? Now, initially, initially the budget line initially the budget line is AB, being tangent with the indifference curve, IC, being tangent with the indifference curve IC, forms an equilibrium point E, with a point on demand curve with given price and quantity, right? So this is the introduction. What is equilibrium? Equilibrium is a point where indifference curve is tangent to the budget line, which forms a point on the demand curve with given price and given quantity. Now let's start explaining what will happen when there is an increase in price and what will happen when there is a decrease in price, right? So let's start. Okay, so what will happen if there is an increase in price? So now I'm gonna write an increase in price of good X will reduce our budget. An increase in price of good X will reduce our budget, causing a leftwards tilt in budget line from AB to AC, comma being tangent with the new indifference curve, with the new indifference curve IC1, forms a new equilibrium
forms a new equilibrium point E1, forms a new equilibrium point E1 with a new point with a new point B on demand curve with a new point B on demand curve with new given price and quantity. Right now you can check. I have written I have written that an increase in price will reduce our budget, which will cause a leftward tilt in budget line from AB to AC, comma new indifference curve IC1 being tangent with the new budget line forms a new equilibrium E1 with a new price and a new quantity and a new point on the demand curve, right? Okay. So now we will write what will happen if there is a decrease in price, na? So a decrease in price, a decrease in price of X will increase our budget, will increase our budget, causing causing a rightwards tilt in causing a rightward tilt in budget line from AB to AD, right? Um, comma being tangent, with the new indifference curve, being tangent with the new indifference curve IC2 forms a new equilibrium point E2 with new given forming a new point on demand curve, comma forming a new point C on demand curve, C on demand curve with new given price and quantity. Right now we will write moreover joining the moreover joining the equilibrium points, moreover joining the equilibrium points forms an upward sloping curve known as PCC। और मैं फुल फॉर्म नहीं लिखा, आप लोग ऑलरेडी पता है। तो ये बेटा ये पूरी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो गई। यहाँ तक आपको 14 मार्क्स मिल चुके हैं नॉलेज और एनालिसिस के। इफ दिस इज क्लियर लेट मी नो सो वी कैन गो टुवर्ड्स द इवैल्यूएशन पार्ट, कंक्लूजन पार्ट। ओके, so this is your conclusion part. Let me read it.
In practice, it is virtually impossible to derive indifference curve since it would involve a consumer having to imagine a whole series of different combination of goods and deciding in each case whether a given combination will give more equal or less satisfaction than other combination. Indifference कर्व असल में प्रैक्टिकली बनाना इम्पॉसिबल है बिकॉज हमें ये सोचना पड़ेगा बहुत सारे कॉम्बिनेशन है A B C D E और सोचना पड़ेगा कि किस पर मोर, किस पे ज्यादा, किस पे कम, किस पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो ये प्रैक्टिकली डिराइव नहीं हो सकता। ठीक है। Also, consumers may not behave rationally and may not give specific consideration to satisfaction. Consumer rationally behave नहीं करता और वो ये एनालाइज नहीं कर पाएगा कि उसको ये गुड कंज्यूम करके कितनी एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है। Lastly, indifference curve are based on satisfaction that consumer believe they will gain from a good. This belief may be well influenced by advertisement. Consumers may be disappointed or pleasantly surprised when they actually consume the good. ये कह रहा है कि भाई असल में जो है ना वो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन जो है वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गई। अगर एक बंदे ने एडवर्टीजमेंट देख के प्रोडक्ट खरीदा है और फिर जब उसने वो असली में प्रोडक्ट यूज करा, उसको कंज्यूम करा, तो उसको वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो डिसअपॉइंट हो गया होगा। तो जो असली सेटिस्फेक्शन और जो सेटिस्फेक्शन लोगों को बताई जाती है उसमें अगर फर्क होगा तो दिस थ्योरी विल फेल अगेन। तो कहने की बात ये है कि हर कंज्यूमर इरेशनल है, रैशनल कंज्यूमर बहुत कम होते हैं। एवरी कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, राइट? सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट ऑफिशियल 20 मार्कर क्वेश्चन फॉर द चैप्टर ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। वी विल डू अनदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच।